उसका काम कम से निभाना है। अगर जो अनफिट लगता है वो दे मस्ट रिजाइन और क्विट द जॉब। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको टीचर का नाम पे आप ऐसे अलग सा बिजनेस करके घूमें। Or establishing a huge building or a kind of infrastructure, that doesn't mean that will bring quality education in the state. If private school, if teachers are not performing well, they may not get the next chance. They may be asked to leave the school. In government schools, once they have appointed, means it is 100% sure that the result it won't affect them. मोरल साइंस आजकल नहीं पढ़ाता है, तभी से नदी किनार में क्लासरूम का अंदर बैठ के इंस्टाग्राम बनाता है, टिकटॉक बनाता है. We have to hear the other party also, like teachers also. Maybe they are appointed legally because of that provision of 85% promotees will be from SSA only. The performance by 10th and 12th standard this year by government schools shows a very depressing result. According to the data given by the Office of Secondary Education, Government of Arunachal Pradesh, we see that the pass percentage of 10th standard is just 39.7%, with Xiaomi scoring the lowest with 25% and Lower Siang being the highest with the pass percentage of 58.2%. And if we look at the 12th standard, the pass percentage of 12th standard is just 61.18%, and Longding district being the lowest with 38.86% and Tawang being the highest with 90.46%. If we compare the pass percentage of this year with the last year, we see that there has been a drastic dip of 10.21% in the 10th standard and 17.4% in the 12th standard. To give our viewers a quick flashback, the year of 2021 was declared as the year education by the state government. Recently, Longding district also made headlines for illegal appointment of elementary school teachers. Given all the facts and figures, one cannot ignore but raise question, is Arunachal actually heading towards educational crisis? So to get some answers, we interviewed some of the prominent figures in education sector. So let us hear what they have to say about this. That is stability of the teacher. Okay, once if private school, if teachers are not performing well, they may not get the next chance. They may be asked to leave the school. So that fear is there. But in government schools, once they have appointed, means it is 100% sure that the result it won't affect them. Okay, performance won't affect so whether children are attending the class or they are doing their homeworks, it won't matter in government schools because they don't take that much care. Or another thing, number of students in the class also very high. Okay, in the government schools, some 80 students are there in classes and 90 students are there in one classroom, and it is too crowded. And even one teacher cannot manage all class in that time. That also affects the performance actually. Okay, and government teachers, they all want their job is fixed, so result won't affect them. So they do their duty. Whether children are performing or not, that it don't matter. That's the thing. But in private school, it is not like that. Private school, performance of students also matter. Otherwise, teacher may lose the job. So they take care. They take care of the students. Okay. We have seen that every year government comes up with so many elaborate programs, midday meals, Sarva Shiksha Abhiyan, so many programs, but still we are not seeing any change in Arunachal Pradesh, and literacy rate is also very poor. Actually, government, they implement so many programs. They are announcing many programs, but the same time, government is not confirming that whether the program is implemented or not. They are not checking it. That they have to verify once program is announced and program given to the schools. Okay, and they have to check and confirm that the function, whatever they done, the program announced, they have done properly. But that is not happening. Every year, new projects are there for the betterment of the students, for the infrastructure. They are developing infrastructure also. But all the announcements are there. But whether it is properly implemented or not, that they are not checking. That's the first prior importance should be given to the education. Only educated people can change the state. So if they are not performing well, it may not affect that much because a good number of students are coming out from the government, not private schools. Okay, so they are performing and they go for jobs and all. At same time, one category of students, they always kept aside.
so they cannot come out. That most of the village areas and all, it is not at all developing. It is because students, people, they when they educated, they can change. But if the proper education is not there, means the changes won't come to the state. Do you think the education system in Arunachal Pradesh is failing drastically, sir? Is there still any hope? Yeah, it is. Education system should be changed. Okay, first thing, government, they are depending totally central board. The state should have their own board, even if it is not area is there, but at the same time number of students are less. But then also if the state has got its own board, they can make lot of changes. So here it is lacking actually. A state should have a board for the education, and they have to implement their own rules there. Okay, it is totally depending on the central government's decisions and all, and they have to follow the central government decision. At the same time, state should have a board that can make a lot of changes. तो बहुत ही दुख की बात है कि बहुत कम परसेंट में ये रिकॉर्ड आया। तभी भी एक्चुअली अभी हम लोग भी पूरा फुल डाटा, ओरिजिनल डाटा जो नहीं आया हम लोग के पास, तो उसको हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी और हमारा चेयरमैन गांधी लोग कलेक्शन कर रहा। तो ऑलमोस्ट ये वीक का अंदर फुल डाटा, जितना फाइनल डाटा कलेक्शन करके तभी हम लोग बता पाएगा कि कितना कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो फिलहाल अभी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। तो डाटा फेसबुक में तो देख रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल डाटा, फाइनल डाटा अभी तक हम कलेक्शन करने में तुला हुआ है। शायद ये कहीं ना कहीं हम लोग का स्टूडेंट अपना जो है कि अपना हम लोग का जो नया टेक्नोलॉजी जो आया उसको शायद गलत ढंग से भी यूज़ करने का वजह, उसमें बिजी रहने का वजह से शायद हो रहा है। क्योंकि नया हम लोग रिसेंटली जितना नया टेक्नोलॉजी आया है उसको हम लोग यूज़ गलत वे से कर रहा है, सही ढंग से नहीं कर रहा। तो मेरे बाहर स्टेट में सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी को वो लोग पहले ऐसे ख़राब यूज़ में करते करते अभी वो लोग पैदा होकर अच्छा यूज़ कर वो लोग आगे जा रहा है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग का भी जो स्टूडेंट है वो भी अच्छा यूज़ करेगा और नियर इन फ्यूचर तो उसको भी अच्छा यूज़ कर जाएगा। और पेरेंट्स को भी सजेशन है कि जितना आप टेक्नोलॉजी, जितना आप मोबाइल को अगर आप वहाँ पे देगा, अपना बच्चा स्टूडेंट को हाथ में पकड़ने देगा, उतना ही आपका कमज़ोरी दिखाई देगा। क्योंकि आजकल स्टूडेंट लोग मोबाइल को सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहा और उतना ही पेरेंट्स लोग भी सब मोबाइल में बिजी है। आई थिंक मेरा नज़र में और कोई पता नहीं, जितना अभी देख रहा है वही है। मोरल साइंस आजकल नहीं पढ़ाता है स्टूडेंट में। हर एक कोई देखता है, अभी बस्ती स्कूल में भी देखता है। हर एक कोई सोशल, ये जब से टावर आया तभी से नदी किनार में क्लासरूम का अंदर बैठ के इंस्टाग्राम बनाता है, टिकटॉक बनाता है, ये सब में थोड़ा बिजी हो रहा है। तो उसको सही ढंग से शायद यूज़ करने से शायद बहुत आगे जाएगा, मेरा विश्वास है। उम्मीद है ये होता है, कभी कभी हो जाता है 1-2 साल में। उम्मीद है हमारा स्टूडेंट भी बहुत टैलेंटेड है, अरे कोई स्टूडेंट है, टीचर हम लोग या लोकल टीचर भी बहुत टैलेंटेड है, ट्राई कर रहे हैं सभी। तो उम्मीद है इन फ्यूचर कमिंग डेज में, कमिंग ईयर में बहुत अच्छा परसेंटेज, शायद आज सेकेंड लास्ट है तो शायद सेकेंड रैंक में आ जाए। और उम्मीद आपसू का साइड से शायद फुल हम लोग उसको प्रोग्राम पॉलिसी गवर्नमेंट किस टाइप से करना है उसको हम लोग एडवाइस भी देगा और हम लोग भी अपना चेक एंड बैलेंस करेगा हर एक स्कूल में जाकर। अभी क्योंकि आजकल ऐसे वहाँ पे एक्टिविस्ट नहीं होता है, स्टूडेंट लोग ऐसे डैम पॉकेट दिमाग बैठा हुआ है, ना स्पोर्ट्स इवेंट होता है, ना ग्राउंड होता है स्कूल में, ना वहाँ पे कुछ पीटी। पहले हम लोग का समय में स्काउट गाइड अच्छा से यूज़ हुआ करता था, आजकल कुछ है ही नहीं, ना स्काउट गाइड है, ना एनसीसी अच्छा से होता है। बस अभी देखता है कुछ स्कूल्स में है, कुछ कॉलेज में है, वही है। बाकी स्कूल जितना सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोलो वहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है, ना स्काउट गाइड है, ना एनसीसी का कुछ एक्टिविस्ट होता है, ना स्कूल वीक होता है, ना स्पोर्ट्स वीक होता है। सब डैम पॉकेट मोबाइल में जुड़ा हुआ है, सब लोग सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ है। शायद उसको यूज़ अच्छा से करना चाहिए था, लेकिन गलत वे से कर रहा है। शायद अभी जागरूकता होगा धीरे धीरे, उम्मीद है। प्रॉब्लम होता है वही है बस। लास्ट एक क्वेश्चन हम पूछने के लिए ये जो लॉन्गडिंग जो अभी हम लोग का आया इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, ये फैक्टर को भी अगर हम लोग देखें तो ये कैसे इफेक्ट करेगा? उसको हम लोग वहाँ लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट से बात हुआ तो हम लोग भी वही बोला फुल डॉक्यूमेंट्स का साथ लाओ, क्योंकि अभी मीडिया में निकल गया बोलकर, सोशल मीडिया में मर्जी हम लोग नहीं बोल सकता। उसका कैसे इंटरव्यू हुआ, कैसे हुआ, ना इलीगल हुआ, पूरा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स का साथ लाओ, तभी हम लोग उसको बात करेंगे, तभी टेबल में लेकर आएगा। क्योंकि अभी वहाँ पे कोई खुद गलती नहीं होकर कोई ज़बरदस्ती, अभी जैसे APC का पेस्को जैसे चल रहा है,
कोई ज़बरदस्ती बुलाकर उसको दिया होगा, उसका कोई गुनाह भी नहीं होता होगा, है कि नहीं। बहुत सारा लोग ऐसे टीचर लोग हैं जिसको खुद आकर भी दिया होगा वो जान। In Arunachal Pradesh, no doubt, is a matter of great concern. So, for this reason, we can't blame the teachers entirely, that only the teachers are responsible, or even also we can't blame the government or the system is responsible for this. So in the whole process, in the whole gamut, that we all are equally accountable for this poor result or for this poor achievement. The parents are equally also responsible, the system is also equally responsible, and we can't blame only that one part of the system, because in the system, whether they are the parents or the teachers or the students and even also the machineries, so all are equally responsible so for this kind of result. And when we want to find out its causes, there are different causes behind the poor result and poor performance in the class 10th and class 12th examinations. Yes, exactly. You have raised a very nice issue, very nice question. That providing all kind of facilities or establishing a huge building or a kind of infrastructure, that doesn't mean that will bring quality education in the state. So quality education, that depends that on the motive and the kind of mission that is being propagated by the system and within the individual itself. So although different programs, the different policies, different interventions that have been launched by the government of India, and also in the same line the state government have also implemented all those policies like midday meal scheme, Samagra Shiksha Abhiyan, or Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. No doubt these are the different interventions according to the policy parameters to bring quality education and to reduce the kind of dropout rates and to even check the kind of stagnations and the retention rates at the school level. But one thing what I understand, that when there is a mismatch between the two levels, that is one level at the foundation, that is foundation level at the pre-primary and the primary level, and next is that is the secondary level, because the result is poor at the secondary level. So we can't blame only the secondary level school teachers in Arunachal Pradesh for this poor performance in the class 10th examinations. And there is a connection with the primary level of education, because primary level of education or the foundational learning is basically the stepping stone, or it is the superstructure for the tertiary level of learning. So when the foundation is weak, automatically the superstructure will be weak. So that's why at present what you see, that there is learning deficiencies, particularly in the basics or in the minimum level of learning at the primary level, which is ultimately resulted at the secondary level. And because of that reason, there is a cumulative learning deficit among the learners at the secondary level, because the child, what he or she has to get and gain at the time of class 4 or class 5 or class 6, if it is not properly understood and also that is being realized through the curriculum. So the same child that cannot grasp the subject matter and understand the subject matter at class 8 and class 9 and 10th level. So that's why in the system, not only we can blame the secondary school teachers or the senior secondary school teachers for this kind of poor performance. And I mean that to my understanding that at the primary level, first we have to give more importance for the foundational stage of learning, and that is also being realized and eventually stated by the present, that is National Education Policy 2020, that how to address the foundational literacy and the numeracy learning difficulties. That is called the learning deficiency, and this has become a very common and the global issue, this learning crisis at the foundation level. So that's why
primary level of education is also equally responsible for this kind of deterioration of the quality education at the 10th and 12th standard of learning. So this is my understanding. Just I want to highlight one thing, that unless and until the student is dedicated, the teacher is committed in his or her profession, and also the parents, they are not involved in the learning process of the child or the ward, then we can't expect a better result in class 10th and 12th standard examinations. So to some extent, for the last 3-4 years, the result is just going down day by day, but it is not because of one reasons only. कोरोना जब आया, उससे पहले, कोरोना आने से पहले क्या होता था कि ये जो हम लोग का पास जिसका बच्चों लोग को 100 मीटर रेडियस तक स्कूल में इवन टीचर को भी बार किया था कि फ़ोन लेके नहीं आना है आपको, मतलब ह्यूमन मतलब एक्टिविटी से, बॉडी एक्टिविटी से आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा के बच्चों को पढ़ाना है। जब कोरोना आ गया तो इसमें ऑनलाइन का जब एक क्लासरूम जब सिस्टम जब आया, तो ऑनलाइन क्लासरूम जब ये सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया कि सब पेरेंट्स ने अपना बच्चों को एजुकेशन को लेके फ़ोन खरीद दिया, सब लोग को फ़ोन खरीद दिया। लेकिन ये कभी पॉलिसी नहीं बनाया कि जब कोरोना जब लिफ्ट हो गया उसका बाद में फ़ोन को वापस करके सीज कर देना चाहिए था। अब ये इन्फ्लुएंस ऑफ ये आपका सोशल मीडिया का वजह, वो फ़ोन को बच्चों लोग भी एक हैबिचुअल्स टाइप का हो गया, जिसमें से उनका पढ़ने का जो हैबिट है थोड़ा सा एजुकेशन को लेके थोड़ा इग्नोर करके जा रहा है। सो हमको लगता है कि ये दूसरा पॉइंट कि टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेन, मे बी टीचर से कुछ गलती आप क्योंकि आप टीचर है, तो ऐसे टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है ये? इसमें टीचर पॉइंट ऑफ व्यू में इस चीज़ का वही मैं मेरिट को अभी तक बताया नहीं है, क्योंकि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू है, टीचर हम लोग का टीचर को भी मैं आपका माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है जितना हो सकेगा बच्चों लोग को जो स्टूडेंट डायरी होता है इसमें अच्छा से लेके, जैसे हमारा पेरेंट आपका टीचर एसोसिएशन हर स्कूल में बनाता है, जो आपका पेरेंट लोग को बुला के फ्रीक्वेंटली आप लोग बुला के फ्रीक्वेंटली मतलब पेरेंट्स का साथ डिस्कस करना चाहिए, अपना वार्ड जो डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है उनको बुलाना चाहिए। अगर इस तरह से अभी तक नहीं हुआ तो इनको भी करना चाहिए। और ख़ास तौर से टीचर पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब से हम दूसरा पॉइंट में ये भी बोलेगा, जैसे हमारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल में आपका SDMC बनाता है, SDMC यानी कि आपका स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी बनाता है, जिसमें से वो आपका उसका मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जितना होता है वो पेरेंट लोग से ही बनाता है। तो इन लोगों से इस तरह का एक स्टेप उठाया जाए कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से है उसको एक सीरियसली लेना चाहिए। और आप एलिमेंट्री सेक्शंस में देखिए उसे SMC बनाता है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी, वो भी स्टूडेंट का पेरेंट लोग से ही लेके बनाया जाता है। तो इनका ऊपर पे थोड़ा सा इसमें टीचर जो है शायद वो करिकुलम को पॉइंट ऑफ व्यू में शायद टाइमली उसको मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए, शायद ज़रूरत पड़ने से अगर एवरी मतलब मंथ में 1 टाइम करने से तब शायद मेरा बच्चों में भी एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा और थोड़ा डेवलपमेंट थोड़ा आएगा। जो है जितना हो सकेगा क्लासरूम टीचिंग को, एक्टिविटी को आप लोग ये कीजिए, और पॉलिटिक्स में आप लोग ज़्यादा ये सब इंटरफेयर मत कीजिए। जब आप टीचर है तो आप टीचर का काम करना है, तो आपको जब गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, आप एटलीस्ट सैलरी के लिए आप जिस ये के लिए आपको सरकार आपको पैसा दे रहा है उसका काम कम से निभाना है। अगर जो अनफिट लगता है वो दे मस्ट रिजाइन और क्विट द जॉब। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको टीचर का नाम पे आप ऐसे अलग सा बिजनेस करके घूमें। मेरा तरफ से मैं सब मतलब सारा मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट को भी मेरा सब सारा अरुणाचल का आसाता का मेरा हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे लोंगडिंग से लेके आपका तिराप तक का, इस तिराप से ले लोंगडिंग तिराप चांगलंग से लेके तवांग तक का हमारा सब आसाता डिस्ट्रिक्ट यूनिट है। मैं इसी माध्यम से सबको मैं मैसेज देना चाहेगा कि जो टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है उनको DDSE और DC का जो SMC का जो ये है उनको इनपुट देके उनको एक्शन लेने दीजिए, हम उनका साथ में है। There are constraints with that because since our state has only like 23k this 1000 GDP per year, so for education also they can't give everything for education, for a single education, whereas in Delhi you can see like 20,000 more than 20,000 crores is spent, like literally 1 GDP of a whole state in a year is spent in health and education in this Delhi. So the infrastructure, even the teachers, there are lack of teachers. I have seen, because I have visited some schools also, I have seen that there are like lack of teachers in so many subject teachers, especially subject teachers regarding to class 10 and 12. There are so many like even I have seen that they also, since I see the CO development charges also, so I have seen there are requirements also. There are requirement literally 84 teachers are required, I think in Upper Siang or what.
something like that, at around that range. The subject teachers which are for class 10 and 12 only. That much of lack of manpower is in the districts. I know like it's taking a lot of time, but it takes a lot of time, because when I was a doctor, I used to think like, why is the health sector not improving? But when I saw the reality, like there are lack of doctors in places like in TCL side, you won't see most of the doctors. In Siang district, you won't believe like there are like emergency EMOs like 2 or 3, just 2-3 EMOs are there, and they only attend the OPDs. They only do that this emergency also. So there are lack of manpower. For our state, like only just state-owned revenue is like 10% of the GDP only. So government can do whatever, the Arunachal government can do whatever in their state-owned revenue only. The others are all like tight. Like if it's for health, then for health. For health also, they are like this part should go for this infrastructure, though they can't divert that fund. So that's one of the issue. There are lack of state-owned revenue, which we call SOR in our these terms. Appointment, what there is, there is a formula for appointment. Like we were taught in the training back in I think January in education department, we were trained. So in that they have told us that for what they do, like 85% is reserved for SSA. So 85% of the teachers, if there are 100 posts empty, like vacant for a PRT, then 85 will be from SSA, promoted through SSA without any interview. It will be done on the basis of seniority. And then from 85, only 15 is from the for direct recruitment. So maybe they are that part. I have no idea. I haven't followed this thing, like because I haven't seen the statement of the other people also, because there is principle of natural justice. So maybe they have been promoted according to that. I have no idea about that, but it can be that only. So we have to hear the both sides, since the natural justice say that we have to hear.